Okay, so are we live? How is the stream going? Yes, Ayush, recording will be there after the stream as well. Hi guys, so we are meeting for the first time, right? Sorry for the background though. All right, so Vedika, if we can record, that will be great. Right. We'll start in 2 or 3 minutes now. Sure. Okay, so we have few participants with us. So we'll just start the class, right? Can we? Just give me a thumbs up and then we'll start.
Okay, perfect. So guys, please introduce yourselves. Hi, Yadula. How are you? Okay, then I'm sharing my screen now. All right. Okay, then. Right. Hi, everyone. So this is Anmol. I'll be your tutor for quants today, right? And we'll be having a good long session today. So take tea, coffee, anything, and let's get started with the pen and paper, obviously, right? So let's start with today's topic, which is number system, right? Which is number system. And the frequently asked questions, right, for primarily for IPMAT are finding unit digit, and on the similar lines, finding last two digits, right? So they go parallelly with each other, right? If the time supports us, so we'll be discussing the rest of the topics. However, they should be fine enough, right? So finding the unit digit and finding the last two digits of a complex number or a powered number, anything would work, right? You may call it anything. So that's the agenda for the class, okay? So first of all, let us know what do we mean by cyclicity, okay? Cyclicity of a number, right? What do we mean about cyclicity of a number? Let's have some noise in the chat box. What is cyclicity of a number? Anyone? Sure, Ayush, will convey your message. What do you mean by cyclicity of a number? Anyone? Cycle.
Yeah, you're very close to giving the right answer, solver, but try a bit hard. What do you think about the cyclicity of a number? Okay, so I'll help you with it. Okay. So see, we are talking about all the whole numbers. Okay. So starting from 1, 2, 3, then 4, 5. It repeats after an interval. Perfect, Anit. 5, 6, 7, 8, and 9. Right. So I've written all the natural numbers or all the whole numbers up till 9. Right. So when I square these numbers, okay, when I take the third power of these numbers, जब भी उसको square करता हूँ, जब भी उसका cube लेता हूँ, जब भी उसको 4 times power पे चढ़ा देता हूँ, या endlessly मैं चढ़ाता रहूँ, cyclicity tells us about the number repeating itself after some interval. For example, अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 को square कर लो, 1 का cube कर लो, 1 को 4 times power पर ले जाओ, या 1 को 99 times power पे ले जाओ, the answer would remain 1. ठीक है, 1 1 1 1. So 1 is repeating itself, right? So its cyclicity would be 1 only, right? 1 is repeating itself, and after each interval of 1, the number is repeated. So the cyclicity of that particular number will be 1 only. Now if I talk about 2, right? So 2 का square कर लो, 2 का cube कर लो, 2 का 4 times करता है, यहीं तक पहुंचते हैं. ठीक है, so let's talk about that. So 2 to the power 1 is 2. ठीक है, 2 का square is 4, 2 का cube is 8, 2 to the power 4 is 16, right? And then 2 की power 5 अगर मैं करता हूं तो 32. So now if we see the units digit, right, it's repeating itself, right? यहाँ पे 32 पे 2 और 32 repeat कर रहे हैं units digit, तो इसकी cyclicity कितनी हो गई, कितने interval के बाद it's repeating itself? 1, 2, 3 and 4. So its cyclicity is 4. ठीक है, समझ आता है ये, हमें समझ आता है? ठीक है, ठीक है, चलो 3 का देख लेते हैं भाई 3 9 27, फिर 3 to the power 4, 27 3 क्या होता है 81, राइट? फिर 243, right? 3 to the power 5 is what? 243. So फिर रिपीट किया इस नंबर ने, तो अगेन द साइक्लिसिटी इज 4. ऐसी वी कैन राइट सबकी साइक्लिसिटी. सो आई वांट यू टू राइट ऑल द साइक्लिसिटीज. ठीक है, 1 to 9 की जल्दी से लिख दो. ठीक है, एंड आई विल कंप्लीट दिस टेबल. यू ऑल राइट ऑन योर ओन एंड वील कंप्लीट दिस टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 460 64, देन 64 4 तो ये तो यही रिपीट हो गया, राइट? इसकी साइक्लिसिटी 2. 5 की, रिमेंबर गाइस, 5 की साइक्लिसिटी ऑलवेज रिमेन्स 1, क्योंकि देखो 5 to the power 1 is 5, 5 to the power 2 is 25. तो यहीं पे they are repeating itself, so the cyclicity is 1 or 5. Now if we talk about 6, right? So 6 ones are 6, 6 twos are 36, right? So again the cyclicity would be 1. Now if I talk about 7, so 7 49, फिर 7 का क्यूब अगर मैं बात करूं तो 343. अगर मैं 7 to the power 4 की बात करूं गाइस 2401. अगर मैं 7 to the power 5 की बात करूं तो 16807. So 7 7 repeated after 1 2 3 4. So its cyclicity is number 4, right? अब if I talk about 8 64, right? Then 64 multiplied by 8 is 512, right? Then 512 multiplied by 8 is 4096, and 4096 multiplied by 8 is 32768. So its cyclicity is what? 1 2 3 4 4, right? And if I talk about 9, 9 ones are 9, sorry, 9 to the power 1 is 9, right? 9 ka square 81, then
81 multiplied by 9, that is 729. So 9 has repeated itself in the units place. So its cyclicity would be 2. I hope this is clear. Please chat box भर दो. Please chat box भर दो. Clear है? सही चल रहा है? चलो, बहुत सही. Sorry. तो एक छोटा सा we'll take an example, right? And इसको नोट करना है, नोट कर लो. वैसे I would want you guys to create your own table. It would be very helpful for you. ठीक है? इसको हम zoom out भी कर देते हैं so that you have a better idea. चलेगा? ठीक है? तो अब कुछ बेसिक रूल्स लिखते हैं फॉर साइक्लिसिटी, राइट? कुछ बेसिक रूल्स हैं हमारे which we have to follow while we deal with all of these concepts, right? उससे पहले एक प्री रिक्विजिट नॉलेज जो हमें चाहिए अबाउट साइक्लिसिटी, आई टेल यू. ठीक है? कि हम लोगों को नॉट अबाउट साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट निकालने के लिए या लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए ये रूल हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों को 1 to मैक्सिमम 30 एटलीस्ट स्क्वायर तो पता होना चाहिए, राइट? 1 to 30 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए. उससे क्या है, वील हैव एन एज. ठीक है? हमें मान लो इफ गिवन 28, ठीक है, तो 28 का स्क्वायर निकालने में काफी टाइम लगता है. तो इफ वी हैव दैट थिंग रिमेंबर्ड, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू टैकल द क्वेश्चंस एंड हेंस सेविंग अप ऑन सम टाइम. ठीक है? सो इट वुड गिव यू एन अपर हैंड एज वेल. ठीक है? जहां पे आप लोग 28 का स्क्वायर आप लोगों को पहले से ही पता होगा, सो इट वुड गिव यू एन अपर हैंड. जरूरी नहीं आए, बट एट दिस एज और एट दिस लेवल it is expected that you would remember it or find it very quickly. Up to you. ठीक है? So मैं बात करता हूँ finding unit digit. Okay. So we'll talk about finding unit digit of a number. So can any one of you help me कि भाई कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं? फिर उसके बाद मैं प्री रिक्विजिट नॉलेज दूंगा and then we'll move ahead. चलो. Yeah. ठीक है? So Vedika, if there are any questions, now just address them if you can, right? So yeah, chalo, finding unit digit of a number. See, for example, right, if you have been given, say, 1, 4, 5, 3 to the power 71. ठीक है? This is the number given to us. Now find the unit digit of this number. Okay, after solving. भाई कैलकुलेटर का यूज मत करना. ठीक है? तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है? Can any one of you solve this? Any one of you? I'll just check the stream as well.
किसी का कुछ आया? I'm not concerned about the answer. The thing that I'm concerned about, you know, the way on how to solve this question. So that's the thing I'm more concerned about. आंसर तो आ जाएगा यार, इतनी कोई टेंशन नहीं आंसर की. वो तो हमारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर भी होगा, उससे हम सॉल्व कर लेंगे, राइट. बट अगर कोई बड़ा नंबर आ गया है ना, और उसकी पावर ई में आ गई, सो हाउ आर यू गोना आंसर द क्वेश्चन? वहां पे तो फिर दिमाग हिल जाएगा, राइट. सो वी शुड नो द वे ऑन हाउ टू सॉल्व इट. कोई बता सकता है? चलो ठीक है, फिर लेट्स सॉल्व इट. काफी टाइम आई हैव गिवन यू, राइट. ठीक है, तो देखो, there are two things, okay, which I call them L and R. Okay, L means the last digit, okay, and R is the remainder. Okay, what is L? L is the last digit, R is the remainder. And how to find the unit digit is L to the power R, and whatever the answer comes, its unit digit would be the answer to this question, right? I hope that was pretty easy, so we'll find it. Okay, now we have the number 1453 to the power 71. Okay, for a moment just forget this number right here. ठीक है, इसको भूल जाओ, कुछ है ही नहीं है. ठीक है, let's take the last digit of this 1453 which is in the base, right? उससे ले लो, that would be my L. डिक्लेयर कर दो L को 3. ठीक है, अब 3 की साइक्लिसिटी क्या लिखी थी हमने? 3 की साइक्लिसिटी क्या लिखी थी? 4. ठीक है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी थी? What was the cyclicity of 3? It was 4, right? So now, in order to find the R or the remainder, we have to divide this power, that is 71, by the cyclicity of the last number, that is 4. Yes, no, maybe. कोई कुछ बोलेगा? Yes, no, maybe, guys. Checking the stream. बोलो हाँ कि ना. समझ आया यहाँ तक? और यू वांट मी टू रिपीट इट? मैंने क्या बोला, जो भी बेस का लास्ट डिजिट है उसको डिक्लेयर कर दो L. ठीक है, और उसकी साइक्लिसिटी जाके देखो, उसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4. अब उस 4 को रखो डिवाइजर में, और डिविडेंड किसको बना दो? जो बेस में वैल्यू है. ठीक है, तो भाई हमने किया, साइक्लिसिटी को डिवाइजर रखा, बेस में जो पावर में जो हमारी वैल्यू है वो बन गया डिविडेंड. अब डिवाइड करो. अब जो 4 को 71 से डिवाइड करूंगा, हल्के हल्के से डिवाइड करना है, ज्यादा जज्बाती हमें नहीं होना है, राइट. तो 4, ठीक है, 31, 7, 28, 3. बस यहाँ पे रुक जाना है, पॉइंट नहीं लगाना है. तो रिमाइंडर क्या आएगा इस? रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 3. नाउ L to the power R, क्या बोला था? ऐसे ही बोला था, 3 to the power 3, which is 27, and the unit digit would be 7. Perfect है जी. Actually, the thing is, we have all the verbal done in our classroom course as well. So if you want, you can join that course, right? So it is there. And we have started with quants. We'll come with logical. We'll definitely come with verbal as well as the time permits, right? Because we are taking daily live lectures in our classroom program. So this might help you because we'll be covering the whole syllabus here as well of quants. But if needed, we can support you if you join in our classroom program. So
Vedika, if you can reach out to Avinash and help him out a bit. Right. Perfect. So ऐसी एक दो questions लेते हैं for your practice, and I want each and every one of you to solve this. Okay. So if I talk about say ठीक है 8293 to the power 53 ठीक है, and the second question would be 4271 to the power 97. Come on guys, or let's take this as 9. Okay. Anya. Here one this time. Yeah. Here one. Okay. Now let's get started. Okay, so we'll deal with this as question 1, this as question 2. Right. So yeah. 8293. L क्या हो गया भाई? 3 हो गया. Cyclicity of L 4 हो गया. Divide कर दो. Perfect. अब जी solve करते हैं. 1 time 13 thrice 1. So the remainder is 1 over here, right? L to the power R, so 3 to the power 1, which is 3. Perfect one. You're right. Now for question 2, 4279, right? L is what? 9, right? Cyclicity of 9, याद हो जानी चाहिए, it's 2. ठीक है? Cyclicity for 9 is 2. Now divide 97 by 2, right? So this is going to be 4 times, right? 8 times 16, 1. Okay. Remainder here is also 1. Okay. Then L to the power R, 9 to the power 1 is 9. Perfect one. AIR 1. Okay. Very good. Nice. So let's move ahead. Okay. Let's take some typical questions which would definitely tease you a bit because that requires a prerequisite knowledge. Okay. So I'll give you a trick question and then we'll discuss about on how to solve these questions. Okay. So the question would be, okay, right.
So if it is given 2016 to the power 2015, okay, first of all find this, then find 2015 to the power 2016, right, and then find the expression 2016 to the power 2015 minus 2015 to the power 2016. I want the value in terms of the unit digits. So if you are solving this expression as well, right, so I want the difference of the unit digits of those 2016 to the power 2015 and 2015 to the power 2016. Okay, so that's what I want. Okay, so just solve it. I want all these three to be solved. Take your time. Okay, if you're liking the session, so please like it, right? And please share it with your fellow aspirants, right? So they can take benefit from it, right? So let's get on to this question. But before this, let's get the prerequisite knowledge for all the upcoming questions, right? So if, right, we've been given the remainder as 0, अगर कहीं पे भी remainder 0 आ जाए, ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन जाता है ओनली एंड ओनली इफ द रिमाइंडर इज 0. ठीक है, कैसे? अब देखो, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है एंड इफ आई हैव द वैल्यूज ऑफ l व्हिच इज द लास्ट डिजिट ऑफ द बेस व्हिच इज गिवन टू मी टू बी 2, 4, 6 and 8. Okay, 2, 4, 6 and 8, then the units digit is always equal to 6. Okay, and if the remainder is 0 and the L is 379, what 379, then the unit digit is always equal to 0. Perfect है?
ठीक है, तो ये एक गुड टू नो फैक्ट है, आपका टाइम सेव करेगा एंड यू विल बी एबल टू गिव द आंसर वेरी प्रॉम्प्टली एंड वेरी करेक्टली। ओके, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं 2016 टू द पावर 2015। कैलकुलेटर पे कर लो, एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वहां से तो होना ही नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, लाइक चलो अब आगे बढ़ते हैं। एल क्या हो गया भाई? एल हो गया 6। साइक्लिसिटी ऑफ 6 हमें पता है भैया 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, हमने लिख दी साइक्लिसिटी 1 होती है। डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 से कुछ भी डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। आर हो गया मेरा 0। नाउ आ रहा है भाई 6 एंड रिमाइंडर 0, या फिर एल टू द पावर आर भी करोगे तो 6 टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। बट इन दिस केस यहाँ पे चीजें गलत हो जाती हैं। यू विल टेक एल टू द पावर आर, तो 6 टू द पावर 0, एंड यू वुड थिंक कि एनीथिंग टू द पावर 0 वुड बी 1, बट you will go wrong over here. So if my L is 2468 and I am getting the remainder as 0, so its unit digit will always be 6. Okay, so unit digit यहाँ पे लिख देते हैं 6। Perfect. And यहाँ पे मैं 2 नंबर और लिखना भूल गया, 1 3 5। ठीक है, so these are the numbers. अब मैं बात कर लूँ 2015 to the power 2016 की। राइट, L कितना है? 5 है। साइक्लिसिटी ऑफ 5 इज 1। राइट, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। L टू द पावर आर, 5 टू द पावर 0 1 होगा, पर नहीं, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी भैया 0। ठीक है, इफ आई हैव टू टेक आउट द डिफरेंस ऑफ दीज, so 6 minus 0 is 6. Perfect. Very easy question. अच्छा, H H H H. Okay. चलो, लेट्स मूव अहेड देन। थोड़े मुश्किल ले लें फिर ना। चलो, ओके, लेट्स डू इट। ठीक है, निकालो 2014 to the power 2012. Okay, when multiplied by 3 to the power 34, and it is divided by, right, 1453 to the power 17. निकालो। ओके गैस, पहले वाले में ना वी हैव डन अ मिस्टेक। तो L टू द पावर R, ठीक है, 5 टू द पावर, इट वुड बी साइक्लिसिटी 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 5 एंड 6 minus 5, द डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 1। राइट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कुछ अलग हमने कर दिया। चलो बैक टू दिस क्वेश्चन।
guys, I'm waiting. चलो यार. ठीक है guys, let's solve this now, right? किसी को हुआ यार? ये आपको भेज ही नहीं रहा है यार, कर तो दे रहे हैं यार ये. Why should I send? ठीक है, तो ठीक है 2014 टू द पावर 2012 लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट रिमेंबर डीमास है. ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इफ यू कुड रिमेंबर, वी यूज्ड टू सॉल्व फॉर बॉड मास, राइट? Brackets of division, multiplication, addition, subtraction. So first we have to solve this bracket, then we have to divide it with this. ठीक है, पहले divide नहीं करेंगे. ठीक है, so if you could remember, we'll do that. So 2014 to the power 2012, L कितना है? 4. ठीक है, 4 की cyclicity कितनी होती है भैया? 2 होती है. ठीक है, cyclicity would be 2. Divide this 2012 by 2. Okay, what would come? What would come, guys? Sorry, remainder would be 0. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? If R is 0 and L is 2468, unit digit would be 6, right? Unit digit would be 6. So UD क्या हो गया इसमें? 6. Okay, now take 3 to the power 34. We'll take it over here. 3 to the power 34. ठीक है, L इसमें 3 है, right? L is 3. So L3, cyclicity of 3, guys, 4. Divide 34 by 4. ठीक है, remainder would come as 2. आ गया भाई, R मेरा 2 आ गया, right? R मेरा 2 आ गया. L to the power R किया, 3 का स्क्वायर 9. तो यहाँ का UD कितना हो गया? 9. तो पहले बेसिकली 6 multiplied by 9 करना है, right? When I have to divide it, then I have to divide it by 1453 to the power 71. तो इसको यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं. L कितना हो गया? 3 हो गया भैया. 3 की साइक्लिसिटी भैया 4. ठीक है, डिवाइड 71 by 4, राइट? ये तो हमने शायद क्वेश्चन पहले भी किया है, राइट? तो 4 और रिमाइंडर आता है यहाँ से 3. तो L to the power R हो गया भैया 27. तो यूनिट डिजिट इज 7. राइट दिस बाय 7, राइट? 6 9s are 54 when we divide it by 7. तो कुछ पॉइंट्स में आएगा. लेट्स टैकल दिस डाउन. 7 7s are 49, right? 5 0.7 49 1. So 7.71. Is that clear, guys? Clear है? ठीक है, 2 कैसे आ रहा है? वन्या, how are you getting 2? डीमास नहीं लगाया क्या? Thank you, Slumpy. Really appreciate it. वन्या 2 कैसे आ गया? है? E to the power x. This is not the thing यार. मतलब h a to the power x to the power y कहाँ पे कर रहे हैं हम? Where are we doing it? Let me know. Where are we doing it? We have 3. But h to the power 5, where are we doing this? We are not doing it anywhere, right? ठीक है, we have 3
numbers I'd say, ठीक है, and exponents का तो कोई property we are not applying it, right? So आसान क्वेश्चन को अपन आसान ही रहने देंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, उससे क्या है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो लेट्स टेक another example, right? Let's take another example, ठीक है, कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले ले, ठीक है, यूनिट डिजिट का जो आया हो वो ले लेते हैं, ठीक है, चलो भैया लेट्स टेक इट। भैया निकाल दो 185 to the power 563 multiplied by 271 to the power 6987 plus, right, 156 to the power 25369, ठीक है, let's solve this. एंड अगर कहीं भी लगता है कुछ समझ नहीं आया, जस्ट स्टॉप मी राइट देयर, ठीक है, वरना यू कैन गो बैक एंड पुल द सीक, एकदम से पढ़ो फिर वापस आ जाओ, ठीक है, दिस कैन बी डन। पहली क्लास है इसलिए धीरे चल रहे हैं, फिर वील पिक अप द स्पीड, राइट। एच 7.71 ही होगा, मतलब ऑब्वियसली विल टेक 7, राइट, नॉट 7.71। हाँ, यूनिट डिजिट देखो इसमें क्या है ना, we'll only take the whole number, we'll not take 0.71, that's very understood why, because यूनिट डिजिट तो होल नंबर ही हो सकता है ना, इंटीजर वैल्यू नहीं आ सकती या डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकती, राइट। सो यूनिट डिजिट 7 होगा, नॉट 1, क्योंकि डेसिमल के बाद वी कैन गो इनटू काउंटलेस नंबर्स, राइट। अब मैं बोलूं यहाँ पे एक और बार हम डिवाइड कर देते हैं, राइट, एक और बार डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा इससे, ये 3 बन जाएगा, कैसे, 7 डिवाइड किया 3 आ गया, सॉरी 7 1, फिर आगे 1 1 1 1 आता रहेगा, बट वी हैव टू टेक ओनली द होल नंबर दैट वी आर गेटिंग, राइट। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा सही ये तब रहता जब ये 56 हो जाता, तब वी हैव गॉट, तब हमें 8 मिलता, वी वुड हैव गॉट 8, तो वो ज्यादा सेंस बनाता, ठीक है। बट इफ वी आर गेटिंग एनी डेसिमल वैल्यू बाय एनी चांस, वैसे होगा नहीं ऐसा, सो वील टेक ओनली द होल पार्ट, राइट, ओनली द होल पार्ट। one, yeah, okay, we'll have to check, we'll have to check. Fine. Vanya, you're giving me the answer, I want the unit digit only. So you're correct for the expression part, but if you're talking about the unit digit, so correct. चलो guys, let's solve it. फिर एक और बार डी मास कैसे करते हैं भाई, एल हो गया 5, अच्छा दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर यूनिट डिजिट, फिर 2 डिजिट पे जाएंगे अपन, ठीक है। एल हो गया 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5 1, 563 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर वुड बी 0, ठीक है, रिमाइंडर वुड बी 0, और हमने पहले टैकल कर रखा है 5 और r 0 वाला, तो माय यूनिट डिजिट वुड बी 5 ओनली, ठीक है। अब 271 पे आ जाओ, 1 वुड बी l, राइट, फिर ये
cyclicity of 1 is obviously 1, right? Then 6987 divided by 1 would be giving us the remainder as 0, right? So L to the power R, 1 to the power 0, 1. Okay. So इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरा 1 आ गया भैया. अब 6, ठीक है, L हो गया मेरा 6, L 6 की साइक्लिसिटी 1, ठीक है, याद हो जानी चाहिए साइक्लिसिटी, ठीक है, साइक्लिसिटी 1. देन कुछ भी डिवाइड कर लो, रिमाइंडर वुड बी व्हाट 0. बट आई हैव टोल्ड यू अगर L2468 हो और रिमाइंडर 0 हो भैया, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है दैट इज 6, ठीक है, दैट इज 6. तो क्या बोला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 हो गया 11 एंड द यूनिट डिजिट इज 1. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट टू डिजिट्स इट इज 11. परफेक्ट. ठीक है गाइस, आगे चलें. Okay, so finding last two digits, ठीक है, we'll quickly cover this topic up. Okay, तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आप लोगों को जो है पावर स्क्वायर्स याद होने चाहिए 1 to 30 के. दिस वुड हेल्प यू इन दिस सॉल्विंग, मतलब दिस टॉपिक का यू आर गोना टैकल दोस क्वेश्चंस इसके लिए, ठीक है, फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स, राइट. तो उसमें स्क्वायर्स की हमें नीड होती है. अब देखो कैसे करते हैं. एक मेरे दो वे हैं सॉल्व करने के, ठीक है. एक होता है बेस टू दी पावर, बेस जहां पे 50 होता है, जहां पे 50 बेस लेके मैं सॉल्व करता हूँ, या फिर मैं बेस 100 लेके सॉल्व करता हूँ. व्हाट आई मीन बाय दिस, ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दिस, अगर भैया मेरे को दे रखा 73 टू दी पावर 819, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है, तो मैं इसको कैसे करता हूँ. अगर मुझे 50 के बेस में से ब्रेक करना है, 50 प्लस 73 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 23, ठीक है. और अगर मुझे बोला जाए बेस 100 में करने को, तो 100 माइनस 27, ठीक है, टू द बेस टू द पावर 819, ठीक है. तो मैं ऐसे इसको ब्रेक कर लेता हूं, ठीक है. अब मेरे लिए निकालना आसान है, ठीक है, या फिर मैं कैसे भी निकालूं, दैट्स अप टू मी. तो अब इसका तरीका समझ लेते हैं, और यू वांट मी टू डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस. Yes. Divide expression by 100, you will get the last digits. Okay, let's check. Okay.
guys, so I'm giving you some questions, ठीक है? फिर एक एक करके we'll discuss those questions और take this as a homework, ठीक है? फिर we'll discuss in the next class और start a new topic, right? So कुछ मैं आपको questions देता हूँ, ठीक है? Because we have to wrap up the class as well. So 45 to the power 62 आज हमने यूनिट डिजिट सीखा है, फिर we'll pace up the classes अगली बार से, ठीक है? 45 to the power 62 निकाल दो, 43 to the power 60 निकाल दो, 67 to the power 72 निकाल दो, जल्दी से लास्ट 2 डिजिट्स और यूनिट भी निकाल देते हैं. Okay, guys. So we are just a tad bit away from ending the session. So if you're liking it, you can support us. If you are having any doubt after it, okay, you may talk to me, right? And right, and if you have any doubt, you can reach out to us. Okay, so all the links are here, and if you have any doubts, so we'll be taking those doubts. So 5-10 minutes we are here. If you have any doubts, you can plug them in right now. Yeah. A to the power x to the power y. Okay, so let's discuss your doubt. What are you saying? A to the power x to the power y will not be equal to a to the power x to the power y. That's what you're saying? Because a to the power x to the power y will not be equal to a to the power xy. That's what you're saying, right? So let's tackle this number. Let's tackle this question by taking the digits. Okay, कोई भी digit ले लेते हैं भाई. A को मान लो मैंने ले लिया 2. ठीक है. X को I'll take 3. Okay, and Y को I'll take say 4. चलेगा? Solve कर दें? H yes no maybe. Solve करें? चलो solve करो. 2 to the power 3
टू दी पावर उसका 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पावर्स। तो बेसिकली हमें 2 टू दी पावर 12 सॉल्व करना है। और अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, राइट, तो हमें क्या सॉल्व करना है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे हमें 8 टू दी पावर 4 सॉल्व करना है। ऑब्वियसली दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी इक्वल। यहाँ पे 2 टू दी पावर 12 की वैल्यू निकालो आप, क्या आएगी, 2 टू दी पावर 12 की वैल्यू आती है 4096। ठीक है, एंड 8 टू दी पावर 4 की वैल्यू, ओके 4096, भाई दे आर इक्वल यार, माय बैड। ये कोई जनरल रूल है, स्टार्ट अपडेटिंग सेशन ऑन योर। ओके, सो लेट्स ट्राई फॉर दिस। ठीक है, 2 टू द पावर 81 नहीं होगा, मतलब क्यों होगा 2 टू द पावर 81? पहले ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे, we'll solve the bracket first, no? How can you go beyond the bracket and solve that? First you have to solve the bracket, क्योंकि आपने मुझे उसी वे में मुझे दिया था ना, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। तो उसमें we'll solve this first, 3 multiply 3 to the power 4 और 3 to the power 4, sorry my bad, 3 to the power 4 क्या होता है, एक तो ना जस्ट टाइपिंग में पावर्स ऑलवेज कमिट्स मिस्टेक। 3 to the power 4 is 81, so 2 to the power 81, हाँ 2 to the power 81 होगा, and this will not be equal to 4096। वो पावर्स ना we cannot understand in chat अच्छे से। ठीक है, so it will not be equal, so again दोबारा करते हैं इसको। ठीक है, खिचड़ी बन गई है इसकी यहाँ पे। We'll take this question again. Okay. हाँ हाँ, वही होगा वही होगा वही होगा वही होगा। देखो 8 टू द पावर x टू द पावर y, तो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो 3 टू द पावर 4 क्या होता है, 81। तो 2 टू द पावर 81 will always not be equal। ठीक है, will not be equal to what, a to the power x। चार्ट पे वो I didn't get the powers well, so a to the power x to the power, that's what you're saying, यही है क्वेश्चन। तो 2 टू द पावर 3 8 हो गया, टू द पावर 4, सो दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, अब अगर दूसरे एक्सप्रेशन की मैं बात कर लूं, आपके इस एक्सप्रेशन की, ठीक है, a टू द पावर x टू द पावर y है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, a टू द पावर x, हाँ ठीक है, तो 2 टू द पावर a, ये मतलब a टू द पावर x टू द पावर y, तो 2 टू द पावर 81 हो गया ये, राइट, दिस इज 2 टू द पावर 81। अब ये देख लेते हैं a टू द पावर x y, तो 2 टू द पावर 3 12, so 2 to the power 12 is never equal to 2 to the power 12। बट ये कहाँ पे लगा रहे हो आप, ये लॉगरिथम्स में यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग इट इन एक्सपोनेंट्स, कहाँ पे यू आर यूजिंग इट? Where are you using it at? Okay, so anybody wants to ask anything, or are we done? So guys, we want a good number, okay? So just tell good number of people to like get the benefit out of it. Acha. हाँ, in this question, हाँ ठीक है, 59 to the power 67 to the power 89. Yeah, this is the question, right? When we divide this by 13. So what do you want? You want the number or you want the unit digit? क्या चाहिए इसमें? Obviously you would want the unit digit ना इसमें, या क्या, या value चाहिए? You want the value. What do you want इसमें? What's the full question? Right. The remainder you want, ठीक है, तो remainder we can find it
remainder you can find it by the units digit. तो हम अभी कर लेते हैं इसको. तो 67 to the power 89 निकालने से भी ज्यादा अच्छा है. इसको इसका L कंसिडर करो और फिर इसके लिए LR से निकालो वैल्यू. फिर जो भी मेरे पास वैल्यू है फिर इसको L कंसिडर करके उसके R के लिए वैल्यू निकालो. ठीक है. So this is how we do it. Okay. Right. Right. Okay, guys. So it was lovely talking to all of you, right? And I really loved the setup over here. Okay, would love to teach more students, right? Because interaction अच्छा होगा क्योंकि आज सिर्फ H वरना starting में लोग ने interact किया, but या थोड़ा patience रखना पड़ेगा. आज की class slow थी, but from next time we'll pick up the pace, right? And yeah, any doubt for your IPMAT journey, UniVoyage is always there for you. ठीक है. So we are there for you and we'll be taking care of you as well, right? So till then, if you do not have any doubts, so we'll wrap up and we'll call it a day. So happy Saturday, guys. Happy weekend. Right. So take care.